हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रांजल व्यास एंड आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज है 10th ऑफ सितंबर, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, जैसा कि आप सबको पता है। और इस साल की थीम है चेंज द नैरेटिव और एंड हेल्प टू चेंज द नैरेटिव। मतलब सुसाइड के बारे में जो स्टिग्मा है, जो बैरियर्स है, उनको हटाने के लिए या उनको दूर करने के लिए आगे आना है और हमें खुद भी प्रयास करना है। ये है इस साल की थीम। कुछ बातें मैं बताऊंगा। ये वीडियो शायद लंबा हो सकता है, तो आप प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। सबसे पहला तो आपको अगर लग रहा है कि कोई डिस्ट्रेस में है, तो उससे कहिए कि वो रीच आउट करें, या अगर आप उनको लेके जा सकते हैं किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास, तो उन्हें लेके जाएं। फिर सीक सपोर्ट, स्पीक आउट। फिर उसको इनकरेज कीजिए कि वो बोले कि उससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या इश्यूज आ रहे हैं सुसाइड के बारे में। बेसिकली एक सेफ स्पेस बना के दीजिए। एंड देन सीक सपोर्ट, मतलब फिर जो भी सपोर्ट चाहिए होगा वो सपोर्ट उससे कहिए कि वो सीक आउट करे। इट कुड बी अ जॉब प्लेसमेंट, इट कुड बी एन इमोशनल सपोर्ट, इट कुड बी वर्किंग ऑन अ सेल्फ, कुछ भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन, द इंडिविजुअल। सो एक ये चीज़ करें। 3 L का ध्यान रखें। सबसे पहला तो लिसन, सुनिए। लुक, देखिए कि उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या इश्यूज़ हो रहे हैं। और तीसरा लिंक, कि उनका मेंटल स्टेट कैसा है, उनका अभी बिहेवियर कैसा है, उनका प्राइमरी असेसमेंट कीजिए। देर आर वेरियस ट्रेनिंग providers right now, providing a basic first aid training in gatekeeping for suicide और suicide gatekeepers, या ऐसे वेरियस टाइटल्स के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, you can join those such programs and be an mental health ally. सो ये ध्यान रखिए। सो ये तो बात हो गई बहुत ही बेसिक्स वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के बारे में। आपको फ्लायर्स मिलेंगे, पोस्टर्स मिलेंगे, बैनर्स मिलेंगे, इंस्टाग्राम रील्स मिलेंगी, जिसमें आपको सुसाइड के साइंस के बारे में बताया जाएगा, नोटेबल साइंस के बारे में, नॉन वर्बल साइंस के बारे में ये सब बताया जाएगा। और इनक्रेज किया जाएगा कि आप रीच आउट कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए, सीख कीजिए। बट एक चीज़ हमें हमें देखनी होगी। द वर्ल्ड इज़ मूविंग वेरी फास्ट। आज दुनिया बहुत तेज़ी से जा रही है, बहुत स्पीड से जा रही है। किसी के पास खुद अपने लिए टाइम नहीं है। इवन इन द काउंसलिंग सेशंस, पीपल ऑफ्टन कंप्लेन दैट आई एम नॉट एबल टू टेक आउट टाइम फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ, मैं XYZ थिंग नहीं कर पा रहा हूँ। So even if someone wants to be a supporter, or if someone wants to really help person in a need, it becomes very very difficult for them to do so. So what can be done? As mentioned, as said, suicide is a multifactorial thing. It is not just a one thing. ऐसा नहीं है कि किसी की जॉब चली गई, इसके लिए उसको सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, या फिर कोई बहुत अच्छा कमा रहा है, उसको फैमिली सपोर्ट भी है, बट ब्रेकअप हो गया सिर्फ उसकी वजह से, उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या फिर एनी सच थिंग इज़ हैपनिंग। इट्स वेरी क्रूशियल, ये सुसाइड को समझना, सुसाइड के बारे में काम करना इज़ एक्चुअली वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। बायोसाइकोसोशल कल्चरल फैक्टर्स जो हैं वो ऑफ कोर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं। सो मेरा ये कहना है कि व्हेन वी आर वर्किंग टूवर्ड्स दी मेंटल हेल्थ, रिमूविंग दी मेंटल हेल्थ स्टिग्मा, एंड स्पेशली आज सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होंगे, क्वीज होंगी एंड वॉट नॉट। पीपल विल बी कमिंग आउट, पीपल विल बी कॉलिंग टू दी हेल्पलाइन नंबर्स, पीपल विल बी रीचिंग आउट टू दी पीपल, to the friends or their loved ones, maybe their spouse, or maybe a college buddy, or maybe a office ka colleague. But the problem is, as I mentioned earlier, we people might and might not have a time, and even if we do have a time, we get exhausted, we get irritated, frustrated, because we do have our own issues to deal with. So developing that empathetic aptitude, resilience, that listening skills, micro listening skill is very very difficult.
one has to do this if he or she really wants to help their loved ones or dear ones. तो ये चीज़ आप कर सकते हैं. ऑफ्टन सुसाइड के बारे में ये होता है कि इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट फीलिंग हेल्पलेस ऑलवेज. कई बार उसको पता होता है कि उसको क्या चाहिए, किस वजह से हो रहा है. उन्हें रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. अब या वो रिसोर्सेज मिलते नहीं हैं या वो फिर रिसोर्सेज जो प्रोवाइड होते हैं वो सफिशिएंट नहीं होते हैं. तो at that time psychoeducation becomes necessary कि whatever they are getting it, how they can start with that, and how later on things can be taken ahead. So ये एक साइको एजुकेशन देना या एक साइको एजुकेट करना बहुत नेसेसरी हो जाता है. So I hope with this short video I am able to make some important things bring on the table to all the people. uh, there will be many reels, Instagram posts, and everything about warning signs of suicide. What is suicide. So I'm not covering those things. In my post or in this reel. I might make a separate one post or a reel on that. But this reel is just to just to bring out on the things which are often get unnoticed, or which are often gets difficult to deal with it. So here are some ways which you can uh, implement or you can utilize to help someone who is going through the distress and tension and adversities. There are many issues, there are many reasons. It could be, as I said, economical. Mostly if you see in the reports, mostly it's an economical. Many a times it's psychological, but the root is always the underneath cause will be always the psychological, because the level of tolerance are getting very low nowadays. So that could be that is the reason, not the solo reason, but that is one of the reason. Things are very difficult for even the caregivers and the person individual who is going through the distress. So take care of yourself and your loved one. I will be putting up few helpline links in my caption. But one which is very handy and which is very short is Telemanus by Government of India. The number is very short and it's memorable. It's 14416 14416 24/7. It is available. So you or your loved one are not alone. You can reach out 14416 14 416 इन गुजराती 14 416 14 416 in English 14416. So reach out and there is a hope in the distress. Hope is still there. Just take a step. Take care.